नमस्कार साथियों। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन, नर्मदा और जोहिला, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी साथीगण का स्वागत है। चलिए आइए, हमारा जो है ब्यूटीफुल सा जो टॉपिक चल रहा था उसे देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन बोल रहा है, द क्लियरेंस वॉल्यूम द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल सिलेंडर ऑफ अ सिंगल सिलेंडर एयर compressor is 10% of swept volume. Swept volume. The compressor has a base of the compressor has a base of 100 millimeter and stroke of 100 millimeter and a stroke of 135 mm and runs at 360 rpm. Suction conditions are suction conditions are 1 bar and 27 degrees Celsius, and delivery pressure is delivery pressure is 5 bar. Compression and expansion curves. Compression and expansion curves follow the law PV की power 1.3 is equal to constant. Calculate the diagram volumetric efficiency. The diagram volumetric efficiency the rate of air delivery, the rate of air delivery and the power input, and the power input required to required to drive
the compressor assuming the compressor assuming a mechanical efficiency of 76%, take R is equal to 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. Alright. अच्छा, beautiful question over here. Now, okay. Now it is the diagram of PV1's pressure volume diagram. Now it is directly considered as ABCD. It is a V3, V4 and V1. It's a swept clearance volume as well as swept volume. Okay. चलिए आइए साथियों, मूविंग फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा V1 माइनस V3, क्लियरेंस वॉल्यूम V3. Now 0.1 is equal to V3 by V1 minus V3. डायामीटर कंप्रेशर का 100 mm, स्ट्रोक लेंथ जो दिया हुआ है 135 mm, सक्शन कंडीशन 1 bar एंड 27 डिग्री सेल्सियस, डिलीवरी प्रेशर जो दिया हुआ है I bar एंड स्पीड 360 revolution per minute. Now the volumetric efficiency, which is equals to 1 plus P2 by E1 raised to power 1 by n minus 1. So it is to be 1 minus
1 minus 0.1 multiplied 5 raised to power 1 by 1.3 minus 1. It is to be 75.51 percentage. Now actual volume to the ratio of swept volume into speed, जहाँ पे n 1.3 pv की पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सब रहा है साइकिल में ही और कहीं बाहर से कुछ नहीं आया हुआ है। नाउ moving ahead, so here the actual velocity efficiency multiplied by swept volume into speed, so swept volume हो जाएगा v1 minus v3 is equal to area of piston multiplied with stroke. It is to be 0.135 into 5 by 4 times of 0.1 square. The value is to be 1.06 into 10 raised to power minus 3 meter cube. Actual volume is to be 0.755 multiplied 1.06 into 10 raised to power minus 3 into 360, which is 0.288 meter cube per minute. Now at the suction condition, अगर मैं देखता हूँ सक्शन कंडीशन में प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 300 केल्विन, so P is equal to rho RT. तो rho is equal to pressure bar 10 raised to power 5 287 into 300, which is to be 1.16 kg per meter cube. Now moving ahead at a delivery side, delivery per minute is equal to 0.288 multiplied with 1.16. Now it is to be 0.334 kilogram per minute. Now the work done is equal to n by n minus 1 v1 v1 minus v2 times of v2 by v1 n minus 1 upon n minus 1. v1 is equal to v1 minus v3 plus v3. It is to be 0.1 v1 minus v3 1.06 into 10 raised to power minus 4 meter cube. So v1 is to be calculated 1.66 into 10 raised to power minus 3 meter cube. We have
the relationship between V4 by V3 is equal to V3 by V4 raised to power 1 upon n. So further calculated after this, V4 value 1.16 into 10 raised to power minus 4 into 5 raised to power 1 upon 1.3. The final value is to be 4.02 10 raised to power minus 4 meter cube. Now the work done is equal to 1.3 over the 0.3 n upon n minus 1 into 10 raised to power 5. Pressure 1.166 into 10 raised to power of minus 3 minus 0.4 times of 10 raised to power minus 3 into 5 raised to power 0.3 upon 1.3 minus 1. Now, which is the value is to be 4.33 10 raised to power 5.76 into 10 raised to power minus 3 into 0.45. वर्क डन कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 1.488 10 रेज टू पावर 2 n. n की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे विच इज 360 53.56 kilogram per minute. Now power required is equal to 53.56 over the 0.76 70.48 किलोजूल पर मिनट है ना. आ गया ना ब्यूटीफुल सर. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये रहा शो दैट द volumetric clearance efficiency of a reciprocating compressor is given by 1 minus efficiency rp की power 1 by n minus 1 where E is a clearance ratio and rp is the pressure ratio. Assuming the expansion process as PV की power n is equal to constant. प्रूफ देना है. ओके इजी सा क्वेश्चन है. शो करके दिखाना है. पीवी डायग्राम बना लेंगे.
It's A, B, C, and D. Suction side and upward one is discharge one. Now, the volumetric efficiency is equal to actual volume of air compressed. Actual volume of air compressed division over swept volume of compression. So it is to be Va minus Vd over the Va minus Vc 1 plus Vc minus Vd over Va minus Vc. So the clearance ratio E Vc upon Vs. So Vc upon Va minus Vc. Va minus Vc. Vc upon clearance ratio. Volumetric efficiency 1 plus clearance ratio over Vc minus Vd upon Vc. It is to be 1 plus clearance ratio minus clearance ratio V naught by Vc. Now the condition is to be PV की power n is equal to constant. So the Vd by Vc is equal to Pc by Pd raised to power 1 upon n Rp की power 1 over Tn. Now the volumetric efficiency, the final draft is to be 1 plus E minus E Rp की power 1 upon n minus 1. That is the final solution. ओके, ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। वीएम क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।